Just give a minute. Yes, now I will. Assalamualaikum everyone. Welcome to the graduate session. And today with us we have Mohammed Shakir joining us from South Korea, and he'll be talking about starting your journey in the universities in South Korea and the kind of international life that international students have in South Korea. So over to you, Shakir. Thank you, Aisha. Bismillahirrahmanirrahim. So today I will try to cover the necessaries about the hunting tips for South Korean scholarship. I think one of the most underrated country regarding the educations, because we didn't think about the South Korea, but it is one of the very bright opportunity for the upcoming youth, especially such Pakistan-like countries. So let's start with my uh, brief introduction. So basically, I am here since 2022, and I am combined student, MS leading to PhD, and now I almost completed third 3 years in South Korea, and I am in at Sungkyunkwan University, which is the top fifth ranking university of South Korea. So, and I am also the chief representative of Pakistani community in South Korea. We claim that we have the largest number of Pakistani students and alumni at Sungkyunkwan University. It is very big and very historical university because it was built in 1398. So very long story, a very long history since the dynasty of the South Korea. So let's start our brief presentation regarding the scholarship. I will not take that much time because I know that there is some almost now 5 p.m. and here 9 p.m. At night. So the targeted student of this presentation will be all engineering students from all categories and all science students, and maybe it is also similar for the BBA, LLB, all the graduate students, but specifically currently I am in that kind of university and that I will majorly focus on engineering students and science students. The rest procedure is same. प्रोसीजर जो बाकी है वो सेम है तमाम किसी भी बैकग्राउंड से हो स्टूडेंट बट द थिंग इज दैट बीइंग from the such a university which is focusing on the engineering students and science students, so that's why I just wrote these things. So the Korean scholarship we can categorize majorly three types. One is the STEM scholarship, which is professor based, and one is very well known scholarship, Global Korean Scholarship. The short form is GKS. And the third is HEC based scholarship, the typical HEC, which is, the different procedure from Pakistan. But the GKS, I will not cover the rest of the two. I will focus on the STEM based scholarship. Which is professor based mostly. But a little bit about the GIGL, Global Korean Scholarship. इसमें ये होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से एप्लीकेशन आती है कोरियन गवर्नमेंट को, और कोटा सीट होता है ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप. इसके फिर दो सब कैटेगरीज होते हैं, एक होता है एम्बेसी बेस पे सिलेक्शन और एक होता है यूनिवर्सिटी बेस पे. एम्बेसी बेस पे जो होता है वो 7 से 10 सीटें वो स्पेसिफिक होते हैं, वो फिक्स होते हैं. और जो यूनिवर्सिटी बेस पे होते हैं वो उसके मज़ीद दो किस्में होते हैं, एक जर्नल स्कॉलरशिप GKS होता है और एक रिसर्च बेस पे GKS होता है. तो उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि एक ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप भी होता है जिसमें आप यहाँ पे आते हो तो 1 साल आप लैंग्वेज सीखते हो, उसके बाद जो है आपका स्टडी स्टार्ट हो जाता है लैंग्वेज, और वो आपको पे करते हैं टोटली कोरियन गवर्नमेंट. So I will talk about just STEM scholarship, which is totally professor-based scholarship, we can say. So the eligibility is very simple. You need to have an undergraduate degree, any kind of degree,
and your criminal record should not be existed, and the CGPA is very normal, that should be 2.5 out of 4.0. And the important thing which mostly we are concerned is the language test. Once you are get selected, then for the visa application you need to have language proficiency, either IELTS or TOEFL, TOEIC, Duolingo. But I will suggest to go for the TOEIC because it's easy and it's cheap, for the South Korea. It's very easy. But it is once you get selected, so don't be panic with this. That's very easy. So the important thing that basically what scholarship cover of South Korean. So the very basic and interesting thing that we are always concerned is the the stipend and the semester fees. So it cover the whole semester fees. For example, if you talk about the SKKU, so we are paying 9.2 million Korean won, which is equal to 1.8 million Pakistani rupees per semester. But the scholarship cover this fees because Korean university is very top university, especially the top 5 university. So there is a lot of semester fees as well. So you don't need to be worried about the semester fees if you get the scholarship. Second thing is the monthly stipend. So mostly depends on professor projects. The more the professor has project, the healthy will be your stipend. Uh, but the very basic and the average stipend for the master degree, if we say, that is 2 lakh Pakistani per month. And the for PhD, that is 2.5 lakh PKR, which is 1 million Korean won. And if you are planning to have a postdoc after the PhD, so then you can have 7.0 lakh PKR per month. So this is the key features of the Korean scholarships. Uh, Additionally, you will have one must international conference from professor side or from the lab side. It's your luck. Either you are going for Europe side, America side, or just Southeast Asian countries. And then all the TADA for the characterization analysis. For example, if you are doing your computer science, AI projects, or from the chemistry sides. So all these characterization and the very basic things which you need for your research will be covered. And if you want to go for outside your university, the TIDA will be covered from the professor fund. And the same for the rest of the research works. One thing to remember here, their research labs and their departments are very strong infrastructure and as well as financially. So you don't need to be care about the expenses. For example, if you are doing some projects in Pakistan, so first of all, we think about the financial figures and the cost. But here, you don't need to take care about it. Everything will be covered from your left side. So that's totally depends on you, the how good you are to utilize these incentives in a good way. And response of these outcomes, what professor expectation? So the professor expectation is very high. Uh, for example, for the coursework, if you talk starting from the coursework, that is very easy in South Korea. You need to cover 24 credit hours for master and 36 for PhD and 52 for 52 credit hours for the master and PhD combined. Uh, Here, GPA system is 4.5 total GPA, and the professors are very polite and they are very generous in regarding the grade. So you don't need to take care about your grade. Uh, but the thing is, high and very hard work in your lab, the professor is demanding. That is 8 to 12 hour average lab work. You will have to spend these hours in lab for your research.
क्योंकि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो रिसर्च होता है वो प्रोजेक्ट बेस पे होता है, और जो प्रोजेक्ट होता है वो प्रैक्टिकल बेस पे होते हैं. वेन एवर देयर आर सम एंटरप्रेन्योर announce their project, so the various kind of professor just go for auction and they get their projects, and then their projects are reviled every year. So based on the performance, the projects in large or the projects may be terminated if your performance is not good. तो कहने का मतलब ये है कि then to fulfill the expectation, you need to do very hard work, because you have to present every the project report and every June of the year. So that's why there is a one very famous circle, that literature review, then experiment, and then paper writing. These three circle just revolving and revolving. Literature review of your topic, and then experiment, and then paper writing to get publications. Because the fifth term, that is publication, is very necessary. Professor will be asking after 2 years that give me a paper, because it's also project demanding. सो पब्लिकेशन भी आपसे चाहिए होते हैं. और इन द सेंस कि आपकी broad future, if we talk about for a long term, so it is also good for your research profile, that they are pushing you for your publication. And the last is you can get 20 days per annum holidays if you want to go to Pakistan, but you will have to bear the travel expenses by yourself, although the holidays are paid. Okay, then the Saturday and Sunday can be they relax, but when you finish your laundry or grocery and kitchen, because one issue in South Korea is that the halal food is very rare, and you need to cook by yourself, unfortunately. Yeah, laundry can be solved. Here is some automatic machines, so just you can use. But the grocery and the kitchen, you need to take care about it. अगर आपको कुछ हलाल खाना हो या वो, तो आपको you need to travel for at least 1 hour 2 hour, क्योंकि शाहजुनादर ही ऐसे होते हैं कि आपको हलाल रेस्टोरेंट मिले. So this we talk a various kind of expectation, and then come towards the application period. So Korean scholarship, as usual, there are two intakes: spring intake, which start recruitment start from 1st October to 31st October, and fall intake start April 1st to April 30. And the semester start for the spring is 1st March to 20 June. That is 4 months almost. And then again for the fall intake, that start from the 1st September to December. Now the very important thing, इसके बाद हम बहुत ही important चीज़ की तरफ आ रहे हैं कि how to start the Korean scholarship, basically how to get, from where we should start. The first point is that target a university. अब यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे कि स्कॉलरशिप को कैसे हासिल किया जाए. सबसे पहले you need to target a university. For example, if you select Sungkyunkwan University, and if you are having like computer science, for example, then just circle the Sungkyunkwan University and select the department. Go to the computer science department. In the website, all the things are available. The one good thing about the Korea is that it is totally updated. Each and everything you will find on their website. And then वहाँ पे जाके आपने एक प्रोफेसर को ढूंढ निकालना है. उसके लिए तरीकाकार क्या होता है? यू नीड टू गो थ्रू द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेसर्स. उसी डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ प्रोफेसर के रिसर्च प्रोफाइल को आप स्टडी करोगे कि इसने क्या काम किया है, पब्लिकेशन इसके क्या है, और ये आज क्या काम कर रहा है. वंस यू सर्कल योर डिजायर प्रोफेसर, so pick the most suitable professor. That's okay, that's my professor, that's what I was looking for. उसको हाईलाइट करें और उसी के
रिसर्च प्रोफाइल को अगेन पढ़े ताकि आपका जहन में बैठ जाए कि उसने क्या काम किया है और उसका फ्यूचर विजन क्या है. देन रीड हैज़ रिसर्च वर्क एज आई सेड, उसका फ्यूचर विजन और प्रीवियस वर्क पढ़े. क्योंकि मोस्टली हम गलती ये करते हैं कि हम पाकिस्तान से निकलने में होते हैं कि बस किसी तरह हमारा काम हो जाए. नाउ दैट्स माई एक्सपीरियंस. आई हैव मेट मेनी पीपल्स हियर. Once they get here to the Korea, after few months they just kick out from the labs. Why? Because they don't know how to work. वो कहते हैं हमारा BS तो अलग था, मास्टर अलग है या PhD अलग है. So if you don't know your master work, your professor work, तो आप ये गलती ना करें कि आप बिना समझे बूझे वहाँ पाकिस्तान से यहाँ पर मूव हो जाए. अदरवाइज यू विल बी सफ़र इन टर्म कि आप प्रोफेसर यहाँ पर ईमेल कर देते हैं इंटरनेशनल ऑफिस को कि ये बंदा इसको मैंने निकाल दिया है, सो टेक केयर ऑफ इट. इंटरनेशनल ऑफिस डायरेक्ट इमिग्रेशन ऑफिस को कह देता है कि ये बंदा आप इधर से फारिग है. इमिग्रेशन ऑफिस से आपको ईमेल आता है कि यू नीड टू एग्जिट फ्रॉम द कोरिया विद इन 15 days. तो मतलब कहने का ये कि वेन एवर यू डिसाइड अ प्रोफेसर, मेक श्योर कि आप उसके काम को जानते हो या उसका काम आपके अंडरग्रेड से मिलता जुलता है. दैट्स द पॉइंट. एंड वंस यू select a suitable professor according to your undergraduation, then write a serious email drop. This is write a serious email drop to the professor. I highlight serious email. This is the major and this is the very important point. क्योंकि आपकी पूरे स्कॉलरशिप की सिलेक्शन इस ईमेल ड्रॉप पे है. जब आप ईमेल अच्छे से लिखते हो, सही ख़ुद को तका के लिखते हो, सो वन एंड ओनली प्रोफेसर. फॉर एग्जांपल ये नहीं कि बाज़ गलती करते हैं कि एक हफ्ते में वो कहते हैं मैंने 100 प्रोफेसर की ईमेल की. नो, डोंट डू दैट. जस्ट कंसंट्रेट ऑन वन प्रोफेसर और उसके लिए एक सीरियस ईमेल ड्राफ्ट लिखें. अब ईमेल कैसे लिखना है, उसमें ये कुछ पॉइंट्स आई वुड सजेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, द ईमेल ड्राफ्ट शुड बी कंटेन show the subject starting from that potential candidate for master or PhD or master PhD combined. So you have only three options: master, PhD or master PhD combined. फिर then आप उसके मेन ड्रॉप में क्या लिखोगे? द ब्रीफ इंट्रोडक्शन दैट माई नेम इज़ दैट, आई बिलोंग फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम Lums University, which is very one of the esteemed institution of Pakistan, and then mention with the year, CGPA, and all these things. That should be cover 2 to 3 lines, and then describe your undergraduate project detail if you have any kind of project or thesis which you done in your undergraduation. So उसका टाइटल और उसके कंक्लूजन कि उसका क्या निकला, इट शुड बी ऑलमोस्ट 4 lines. और फिर उसके बाद लिखोगे करस्पॉन्डिंग वही प्रोफेसर जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसके पेपर रिव्यू आप लिखोगे. मसलन उसके मोस्ट रिसेंट जो पब्लिकेशंस है, you need to mention this paper that okay professor, I read your paper, this you mentioned this, I found that your work is quite similar to my future planning. And then mention your future research planning that okay professor, now I have done all this and now I want to continue my pursue education and research academic in this part and I want to do this. If you have some research planning, please do mention in your email drop so that he could find you enthusiastic candidate that okay, the right person is approaching to me. And please also mention the research work experience or if you have any publication, क्योंकि कोरियन प्रोफेसर उसी सीवी को या उस ईमेल ड्राफ्ट को सीरियस लेते हैं जिसमें उसका कुछ प्रैक्टिकल वर्क हो. एंड डोंट राइट एनी एग्जेजरेटेड सेंटेंसेस इफ यू डोंट नो अबाउट दैट थिंग्स. फॉर एग्जांपल हम गलती ये करते हैं कि हम लिखते हैं कि प्रोफेसर हमें HPLC आता है, हमें ACM आता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टराइजेशन.
और फिर जब इधर आ जाते हैं प्रोफेसर डिमांड्स अकॉर्डिंग टू हिज सीवी, क्योंकि वो ईमेल में पड़ा होता है और जब वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा होता, सो देन ऑल द प्रॉब्लम जस्ट स्टार्ट फॉर दैट पर्सन, क्योंकि वो फिर कहता है यू डिड इमोरल things to me, you did lie to me, like these things. Or Korean professor, and Japanese and Chinese, all these three countries have very similar behave कि वो इस चीज़ पर compromise नहीं करते. So be a realistic and don't make any exaggerated sentences. So that should be the email draft scenario. And again, I am repeating, email draft is the thing which will decide that you are the perfect candidate for the professor or not. क्योंकि यहाँ पर ये वाला स्कॉलरशिप जो है ये टोटली प्रोफेसर बेस है. प्रोफेसर विल डिसाइड आइदर यू डिजर्व दिस स्कॉलरशिप और नॉट. उसके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं. ही नीड टू डिलीवर हैज वर्क थ्रू हैज कैंडिडेट. तो जब उसको पता लगे कि इस बंदे में दम है, ही विल डेफिनेटली गो फॉर यू. सो ईच एंड एवरीथिंग विच विल डिसाइड दैट इज ऑन द स्क्रीन, द ईमेल ड्राफ्ट. सो बी प्रोफेशनल, कोई उससे फेवर नहीं मांगना, एंड बी प्रोफेशनल एंड मेक अ कम्प्रिहेंसिव वन कि आप बिल्कुल जो है ना समंदर को 8 से 10 लाइनों में उनको फॉरवर्ड करें. And once you get the professor acceptance, if he say that's okay, I have projects, so I have a vacancy, you can join me, वो email करेगा आपको. उसके बाद स्टार्ट होता है ऑनलाइन अप्लाई एडमिशन पीरियड. और जैसे मैंने पहले बताया, एडमिशन पीरियड स्टार्ट होता है स्प्रिंग का, स्टार्ट होता है अक्टूबर अक्टूबर में, और जो फॉल इनटेक है वो स्टार्ट होता है अप्रैल में. सो देन यू विल स्टार्ट ऑनलाइन अप्लाई. ऑनलाइन अप्लाई के 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़ होते हैं वो यूनिवर्सिटी के. और देन जस्ट स्टार्ट द HEC अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर अटेस्टेशन, मोफा अटेस्टेशन जिसे हम कहते हैं. ये आपके डॉक्यूमेंट शुड बी अटेस्टेड विद द HEC एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर. और जैसा मैंने कहा कि अगर जब आप सेलेक्ट होते हो तो उसके बाद आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे वहाँ पर आप, मैं सजेस्ट करूँगा देन यू शुड गो फॉर द टॉइक फॉर द कोरियन. टॉइक एक तो ये है कि आजकल आई थिंक 18 से 20,000 में हो जाता है, और दूसरा ये कि आसान होता है एज कम्पेयर टू द आइल्स. So these are the documents which you need to prepare instantly once the professor give you acceptance. Uh, at the time of after acceptance, you need to have these documents, very important documents. So the degree period duration, that is the same as Pakistan, 2 years and 2.5, maximum 4 year for PhD, and for combined it is 5 to 6 a year. It may prolong to 5 to 6 year. Totally depends on the professor mood and professor and your, of course, your performance. If he is satisfied with your work and you have some publications, 2 or 3 publication, then definitely he will graduate you within the time period. So here is some Korean top 5 universities. Just start from today. I will suggest आप आज ही से इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी टारगेट करें जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ है. सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, यूएनसाई, कोरिया यूनिवर्सिटी, एंड केस्ट यूनिवर्सिटी विच वी से काइस्ट, एंड द संक्यूंगवान यूनिवर्सिटी. ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ है. ये इनमें से कोई भी एक यूनिवर्सिटी पकड़े, वहाँ पर अपने अंडर ग्रेजुएशन के मुताबिक डिपार्टमेंट जाए, और डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर को पकड़े, आई जस्ट रिवाइज अगेन, और उसी प्रोफेसर के प्रोफाइल को 2-3 दफ़ा रीड करे और उससे डिराइव करे कि वो आपके अंडर ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, और फिर उसको एक कंप्रेहेंसिव एंड प्रोफेशनल टाइप ड्राफ्ट लेके अलोंग विद यूर CV. CV भी ज़रूरी है, सॉरी आई फॉरगॉट. CV along with your CV attach, और उसके बाद जस्ट उसको ईमेल कर दें. So that's all for the presentation. Please ask any question if you have regarding this presentation. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum salam.
मेरा क्वेश्चन था कि आपने बोला कि 20,000 फीस है अप्लाई करने की, तो ये वेव जी। ऑफ होती है? ये वे ऑफ नहीं होती। और मेरे ख्याल नहीं, बल्कि एग्जैक्ट ये वाहिद फीस है जो नॉन रिफंडेबल है और वे ऑफ नहीं होती। इसके बाद आपने कोई पैसे, कोई 1 रुपया भी अदा नहीं करना। जस्ट दिस इज़ द ओनली फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग विच यू विल पे, दैट इज़ द 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़। ये तमाम यूनिवर्सिटीज मतलब 20,000 है, ये आपने बताई हैं, टॉप 5 यूनिवर्सिटी बताई हैं आपने। जी। इससे कम हो सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तमाम यूनिवर्सिटी के जो है वो इससे कम हो सकते हैं, क्योंकि ये टॉप 5 वाले हैं तो इनकी 20,000 है। बाकी जो है उनकी इससे कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, थैंक यू। वेलकम। Okay, Shaki, we have some questions in the chat box as well. You want me to read them out, or you read them from the chat box yourself and answer them on the go? ओके, सो कैन यू प्लीज़, बिकॉज आई एम नॉट फाइंडिंग हियर। Okay, perfect. So the first question is from Zainab. She's asking, sir, is this about JKS only? I think she's referring to some slide. Zainab, maybe if you could mention the slide, that would be great. And then another question is, how much is the fee if we don't get the scholarship? The fees, as I said, it's very huge. That is 9.2 million Korean won and $6,500 per semester. And then if we convert into Pakistan, so that is 1.8 million Pakistani rupees. Sorry, the first part of the question I couldn't get. Yeah, I couldn't get it as well. She's referring to some slide, so we'll have to figure Okay, it out okay. later. I think she is talking about GKS one. Yes, GKS one. Here is the, yeah, GKS। इसके जैसे मैंने बताया कि इसके दो ट्रैक्स होते हैं, एक एम्बेसी ट्रैक्स होता है और एक यूनिवर्सिटी बेस होता है। एम्बेसी ट्रैक पे जो होते हैं वो सीट्स फिक्स होते हैं, वो 7 से 10 है, वो फिक्स होते हैं। और अगर आप, तो उसमें डेफिनेटली कंपटीशन ज़्यादा होता है पाकिस्तान की तरफ से। और अगर हम यूनिवर्सिटी बेस पे बात करें तो वो सीट्स वेरिएबल होता है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ गुड योर एप्लीकेशंस एंड हाउ गुड योर प्रोसीजर इज़, कि अगर आप अच्छे से पेपर वर्क कर लेती हो और अप्लाई करते हो तो you there's a bright chance to get GKS. For example, if you talk about the previous 2 years, इसमें पाकिस्तान का असल कोटा है 24 सीट। जर्नल की अगर हम बात करें, 7 सीट एम्बेसी से और 24 सीट इससे हैं, तो टोटल मिला के 31 सीट्स है। लेकिन प्रीवियस 2 इयर्स में इंडोनेशिया और मलेशिया की सीटें भी पाकिस्तान को मिली, बिकॉज ऑफ विच आई हैव सम फ्रेंड्स एंड आई केम टू नो दैट आई थिंक मोर देन 50 स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड इन GKS। तो जब आपकी स्कॉलरशिप की जो डॉक्यूमेंटेशन अच्छी हो और क्वालिटी वर्क हो तो ये तादाद बढ़ते भी है ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप में। और उसमें ये होता है कि आपने पहले 1 साल यहाँ पे आके लैंग्वेज सीखना है, उसके बाद आपका मास्टर स्टार्ट होता है। इट्स मीन दैट GKS के केस में आपका मास्टर 3 साल में कंप्लीट होगा, और अगर आप PhD स्टूडेंट हो तो आपका PhD कंप्लीट होगी 5 साल में, क्योंकि आप 1 साल वो करते हो, लैंग्वेज सीखते हो। और GKS में आपको 2 साइड टिकट भी मिल जाता है, एयरफेयर। आप पाकिस्तान से यहाँ और यहाँ से पाकिस्तान, योर होल एकेडमिक, आपको जस्ट ये 2 टिकट मिलते हैं, ये भी GKS साइड से। और अमाउंट ऑलमोस्ट सेम है, GKS में भी 1 मिलियन कोरियन वॉन मिलते हैं जो कि पाकिस्तान के 2 लाख बनते हैं। और बाकी जो स्टेम बेस्ड स्कॉलरशिप है उसमें भी 2 लाख मिलते हैं। लेकिन GKS में आप कह सकते हैं कि प्रोफेसर का इतना स्ट्रेस आप पर नहीं होता, क्योंकि आप प्रोफेसर आपको पे नहीं करता। सो देन आप जस्ट आप लैब वर्क करते हो और अपने मूड के हिसाब से करते हो। जबकि स्टेम बेस्ड स्कॉलरशिप जो होता है, आप एक साइड से कह ले कि आप
प्रोफेसर के अंडर जॉब कर रहे होते हो. यू नीड टू वर्क फॉर प्रोफेसर एंड हैज़ प्रोजेक्ट. ये दैट्स ऑल फॉर GKS. Thank you, Shakir. And now we have another question from Ali. He's asking how much is the fee? We have already covered it. Then we have another question. Does the scholarship also cover medical expenses or insurance? नो. मेडिकल इंश्योरेंस, ये बात याद रखें कि मेडिकल इंश्योरेंस और जो वो होता है इनकम टैक्स वगैरह, वो आपकी सैलरी से कटते हैं. यहाँ पर 8% टैक्स है. तो फॉर एग्जांपल अगर आप 1 मिलियन सैलरी है तो 8% टैक्स लगा के उस हिसाब से 30,000 या 40,000 टैक्स जाता है, और 70,000 कोरियन वॉन आपका हेल्थ इंश्योरेंस पर मंथ कटता है. क्योंकि यहाँ कोरिया में you know that Korea is one of the most expensive, but regarding the standard life, Korea is providing the standard life, so you need to pay some taxes, और उसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल है जो आप मंथली पे करोगे. अदरवाइज यहाँ पर विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस द हेल्थ इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव. सो ये आप अपनी हर मंथली आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते हैं. And now we have another question from Zainab. She's asking, sir, what to do if one doesn't have publications and only work experience? Yeah, it's okay. No, that's good. That's good. मेरा कहने का वो मतलब था, if you have some work experience or publication, so it's give you some positive edge. So if you have work experience, please do mention in your email drop. Professor, focus to that person who has some work experience, because उसे पता होता है कि अगर ये बंदे को मैं इधर लाऊं, so he can work for me and he can do projects. सो वर्क एक्सपीरियंस ज़रूर मेंशन करें. और अगर आपका पब्लिकेशन नहीं भी है, सो जस्ट डू मेंशन अबाउट योर previous thesis, which is must and necessary for the graduation in Pakistan. So just do mention your thesis that I did this project. That also will help you in your selection. So ये चीज़ें भी उधर आप mention करें. Thank you. And we have another question from Shahab. He's asking, is proficiency in South Korean language required? Nowadays, there is a scheme that you can skip the language test and the English proficiency language test. आप skip कर सकते हो. पहले वीज़े के लिए मस्ट था, आप skip कर सकते हो. आप ये कह लें कि there is a website, you need to upload some documents, और आप अपना वो skip कर सकते हो. बट द थिंग इज़ दैट आप जब यहाँ पर आ जाए और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, तो आप फिर यहाँ पर आइल्स दोगे अगर आपने पाकिस्तान में नहीं दिया, या टॉइक दोगे, कोई भी लैंग्वेज टेस्ट फिर आप यहाँ पर दोगे. नाउ इट्स अप टू यू कि आप पाकिस्तान में टेस्ट दे के आते हो या फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद आप टेस्ट देते हो. लेकिन दूसरे कंट्रीज़ की तरह इतना नेसेसरी नहीं है. आपकी जब सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद भी आप टोइक टेस्ट दे सकते हो, आप टफल दे सकते हो, आप आइल्स दे सकते हो. सो टोइक मोस्टली इजी भी है और चीप भी है. तो वंस यू गेट सेलेक्टेड, आई थिंक दैट इज इजी टू गो फॉर द टोइक टेस्ट. And सर मेरा इसमें ये सवाल था बेसिकली कि टॉइक और आइल्स वगैरह तो इंग्लिश पे टेस्ट होगा, तो क्या साउथ कोरियन लैंग्वेज के लिए भी टेस्ट वगैरह कोई देना पड़ता है? नहीं जी, साउथ कोरिया लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मीडियम ऑफ टीचिंग जो है वो इंग्लिश है. सो इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी. और यहाँ पर जो है आजकल, पहले में ये होता था कि जितने भी एजेड प्रोफेसर है उनको इंग्लिश का इशू होता है, लेकिन जो न्यू जनरेशन है, इनके न्यू प्रोफेसर है, दे आर टोटली ग्रेजुएटेड एंड दे हैव डन दियर ग्रेजुएशन, होल ग्रेजुएशन फ्रॉम USA. सो उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है. वहाँ यहाँ पर उस तरह का कोई इशू नहीं है. और आजकल स्पेशली साउथ कोरिया में इंग्लिश पर काफ़ी तवज्जो दिया जा रहा है, बिकॉज दे नो दैट इंग्लिश इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर कम्युनिकेशन. और स्पेशली साउथ कोरिया में हर तीसरा चौथा बंदा आपको इंटरनेशनल मिलेगा. तो यहाँ से इनको ये रियलाइज़ हुआ कि इंग्लिश इज़ सो मच इम्पोर्टेंट एंड वी आर लैकिंग इन दैट फील्ड. सो नाउ डेज यहाँ पर वो इशू नहीं है. सो इन शॉर्ट,
कहने का मतलब ये है कि कोरियन लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है. इट्स अप टू यू, आइदर यू वांट टू लर्न बाय योरसेल्फ और नॉट. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. Perfect. And now we have a question from Zainab. She's asking, is TOEIC only accepted in South Korea or elsewhere as well? Sorry. She's asking, is TOEIC only acceptable in South Korea or in other countries as well? Okay. As far as I know, TOEIC is accepted in South Korea and Japan. But I am pretty sure about the South Korea and Japan. But I think it has some selective countries. Now I'm not sure. So whenever you are trying to apply for some countries, please do some research about it. But मुझे इतना यकीन है कि टॉइक कोरिया और जापान में एक्सेप्टेबल है. और इस वजह से ये कि हम मोस्टली इस तरफ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते. हमें ये खदशा होता है कि यहाँ पर इश्यूज होता है लैंग्वेज का, कोरियन लैंग्वेज या XYZ. But believe me, South Korea is one of the best country for the education and for the living as well. Both peaceful, no racism, no conflicts. Everything is perfect. Very peaceful country. No crime, no drugs, anything issues. Even they don't do these things which are immoral. Like they don't drink at the roads like in South USA or European countries. Very polite, very civilized. सो इस वजह से मेरा अब यही वो है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाऊं. सो टॉइक का मुझे पता है कि वो साउथ कोरिया और जापान में एक्सेप्टेबल है. मुझे बाकी का इतना वो नहीं है. Thank you. And the next question is stipend offered enough for living there? Yeah, more than enough. Because if you are getting 1 million, so including your rent, including your meal, still you will have 600,000 कोरियन वॉन. मतलब अगर आपको 10 लाख कोरियन वॉन मिल रहे हैं मास्टर में, तो आपके पास फिर भी 6 लाख बच जाते हैं सेविंग में, जो कि पाकिस्तान के 1,20,000 बनते हैं. यस, सो यू कैन हैव सम सेविंग एज वेल. The next one is, can you guide a little about Japan as well, if possible, especially MEXit scholarships? So yeah, one of my friend has also got selected in the MEXT, a very good scholarship. So उसका भी GKS टाइप, ऑलमोस्ट GKS टाइप ही है. वो भी यूनिवर्सिटी बेस होते हैं और आपको यूनिवर्सिटी पे करती है. आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस भी यूनिवर्सिटी देती है. और जिस तरह कोरिया का GKS है, इसी तरह जापान का MEXT है. और उनका स्टार्ट होता है एग्जैक्टली उनका भी 5 अक्टूबर से स्टार्ट होता है अप्लाई once an year. So MEXT then go for that 2, उसके लिए भी अप्लाई करें. और अगर आप जापान आए हो तो आप ऐसे हो कि आप कोरिया गए हो. अगर आप कोरिया गए हो तो आप ऐसे हो कि आप जापान आए हो. Their conferences are similar. Because their communication is very good with each other, or they don't need visa for their travel. So Korea and Japan is like Karachi and Lahore. So they just take their bag and with passport and fly to the Tokyo and Seoul. So अगर आप जापान में होते हो तो आप साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटीज़ और प्रोफेसर से फ़ायदा उठा सकते हो. अगर आप साउथ कोरिया में हो तो आप जापान वाले से फ़ायदा उठा सकते हो. लाइक वी हैव 2 conferences in Tokyo every year. So I visited twice, and now our next conference is Bali, Indonesia. So कहने का मतलब ये है कि both are similar if we talk about their civilization, their education, infrastructure, everything, almost everything. Because I met so many professors, Japanese professor and Japanese students, so they have similar type. So either go for mixed or the GKS, they have the same criteria as well. Thank you. The next question is from Abdul Rahman. He's asking, what's the work culture like in the research labs? Work culture as a typical job hours starting from 9 a.m. to the 6 p.m. or then you will have 1 hour break from 12 to 1 p.m.
वो ब्रेक होता है। बाकी आप लैब में टाइम गुजारोगे, खाने पीने का भी बंदोबस्त लैब ही करते हैं। मतलब ये कि लैब में कॉफ़ी शॉप भी होते हैं कि आप एक्टिव रहे, काम करें। लंच वगैरह भी वीकली आपको लैब से होते हैं, एक लंच होता है। कुछ चाइनीज़ और कोरियन खाने हम खा सकते हैं, या सी फूड्स वगैरह वो हम खा सकते हैं, हलाल होते। तो टिपिकल वही होता है, हफ्ते इतवार की छुट्टी होती है और वीकली एक मीटिंग होती है, देन इन विच यू हैव टू प्रेजेंट द योर वीकली परफॉर्मेंस विच यू हैव डन योर इन योर लैब। आपने प्रोफेसर को मीटिंग में वो प्रेजेंट करना होता है। और या दैट्स एम। और अगर आपका क्लासेस हो रहे, तो जस्ट यू विल गो फॉर द क्लास, वंस यू फिनिश क्लास देन कम बैक टू द लैब। ये कल्चर होता है 9 सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक। Thank you. And Abdullah has a follow-up question as well. Also, if one has committed to the MS Leads to a PhD program, can we discontinue after obtaining our master's diploma? You mean you want to say that can we split the master PhD into just master? Yes. आप कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन प्रोफेसर मूड, बट मोस्टली प्रोफेसर डजंट लाइक इट बिकॉज they are very smart. They think that master student cannot do their projects, because during the master they just learn the research work, the project and the lab environment, and after 2 years they start to mean return back. सो वो उनको पता होता है कि मास्टर में वो सीख लेता है सब कुछ, और पीएचडी के दौरान वो पब्लिकेशन भी करता है, वो मेरा प्रोजेक्ट भी करते हैं। तो दैट्स वाई मोस्टली प्रोफेसर फोकस एंड प्रेफर master to PhD candidate or just PhD candidate. Master nowadays is very difficult to get admission or scholarship in South Korea, क्योंकि मास्टर से उनको इतना कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होता, और मास्टर वाले को बग़ैर पब्लिकेशन के भी वो ग्रेजुएट करते हैं यूनिवर्सिटी वाले। तो वो कहते हैं कि वो इवन विदाउट अ सिंगल पब्लिकेशन अ मास्टर स्टूडेंट कैन गेट डिग्री। सो दैट्स वाई master's candidate is not that much profitable for them, because they invest on the student, but master student couldn't return back in a term of publication and projects. So that's why MS Lead to PhD is most fascinating one regarding the scholarship hunting, and the PhD one. Thank you. The next question is from Shahab. He's asking how much competitive is the scholarships? Scholarship बिल्कुल भी competitive नहीं है साउथ कोरिया की। Totally depends the professor projects. If you are targeting a professor who is having a large number of projects, so definitely he will have a good amount of financial records and finance. तो फिर वो उस हिसाब से अपने प्रोजेक्ट के लिए बंदे लेते हैं। तो like in this semester in my lab, our professor is recruiting 3 Pakistani students from Pakistan. क्योंकि this in the previous year our professor got 3 projects and he needs at least 6 students. So that's why he got 3 students from Pakistan and 3 from China. So it totally depends on the professor projects to whom you are applying. और वो प्रोफेसर आपको कैसे मिलेगा? वही जो मैंने तरीका बताया कि आप एक एक प्रोफेसर के प्रोफाइल पे जाओगे, वहाँ के मेंबर देखो कि इसके पास कितने मेंबर है। अगर मेंबर ज़्यादा है, इट्स मीन कि वो प्रोफेसर तगड़ा प्रोफेसर है, उसके पास फाइनेंशियल वो है, स्ट्रेंथ है, और वो अकोमोडेट कर सकता है। सो फिर आप कह सकते हो ही इज़ द राइट पर्सन टू अप्लाई। तो उस लिहाज से एक तरीका ये भी है कि आप किसी भी प्रोफेसर की तरफ जाओगे तो उसके नंबर ऑफ मेंबर को देखो कि उसके लैब में कितने मेंबर्स है, और इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। सो या दैट्स अ गुड पॉइंट, मेरे जहन में भी आ गया। अ गुड हिंट्स टू फाइंड अ सुटेबल प्रोफेसर is that judge the number, count the number of student he has, because साउथ कोरिया में ये है कि किसी भी प्रोफेसर के लैब को आप एक्सेस कर सकते हो, उसके मेंबर को आप देख सकते हो।
तो आप उधर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस प्रोफेसर के पास फंडिंग है और इसके पास प्रोजेक्ट्स है, जब उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे। Thank you. The other question is from Abdul. He's asking, do you get opportunities to network with extensive lab hours? You mean he want to ask about the part-time job? The networking, like socializing and all that stuff, I guess. Maybe Yeah. Abdul can explain it better. Yeah. There's enough time. For example, we have good community, Pakistani community. We call PSEC, Pakistan Student Association, like this. So we are having some trips together because there are almost 3 buses. Some Jeju Island, Busan, one of the beautiful place of South Korea near the ocean, और क्रिकेट वगैरह इस तरह जिस तरह स्पोर्ट गाला पाकिस्तान में हुआ करता था, इधर हम भी करते कोरिया लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे। वो चीज़ आपकी बैलेंस होती है, बट ये है कि फिर आप इतने बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हो सोशल उससे। कुछ लोग अवॉइड करते हैं, वो जस्ट लैब वर्क करते हैं, और हम जैसे बंदे वो बस इसको बैलेंस ही रखते हैं, सोशल भी होते हैं और वो है कि रिसर्च भी करते हैं। तो या इफ यू आर सोशल पर्सन, you will get enough time for that too। फिर आप हफ्ते इतवार को, अब जैसे आज से 11 दिन की छुट्टियां स्टार्ट हो गई, सो देन यू आर फ्री फ्रॉम द लैब, जस्ट गो where you want, here and there, you can go everywhere। आज से 10-11 दिन की छुट्टियां हैं इनके। सलोल हॉलीडे, सलोल न्यू ईयर की, चाइनीज़ और कोरियन की होती है और जापानीज़ की। तो ये 11 दिन की छुट्टियां है, wherever you want you can go। Thank you, Shakir. And if anyone has any other question, you can ask, otherwise I'll end the session. If anyone has any question, they can raise their hand. Perfect. I guess there's no question. Abdul Rahman is writing something. That's okay. He's just thanking. Thank you, Shakir. Thank you for the informative session and answering all the questions. I'm sure those who attended the session have benefited from the session, and you have inspired almost many to You're welcome. It's my pleasure. And please, if you have any kind of queries regarding this, just email me, or I have my number with you. You can contact with me, and I will also share in PDF form if anyone want to follow these guidelines, and they can also contact me through the email. I will be happy. Perfect. Thank you, Shakir. And thank you everyone for joining in. And if you have any question, you can always email me later on and I'll get you connected with the mentor. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you, Manish.